Great. I'll just introduce Vivek. So, hello everyone. I hope you guys are having a nice evening. So, we have Vivek today with us. He's the head of marketing at New Tribe Capital, which is one of the biggest venture capital firms in Web3. And I know Web3 is a buzzword, and we have been listening. We are being bombarded by this term from every single channel, every single mode of communication we can think of. But it is confusing and intimidating. But we have Vivek here to help us out and tell us more about new opportunities that are opening up in this space and how people can capitalize on them. So, Mike, over to you, Vivek. Sure. Okay. Yeah. So shall we start? Yes. Cool. Okay, guys. So hi, how are you doing? I think Chandan, yeah, we are missing him. Let's go. Okay, good to see the spirit. How's the week has been for you guys? From wherever I believe you are spread across India. So how's everything going on there? How's the summers have been for you? Let's keep this session as a little bit a chill one. Let's do a talk session first. काम की बातें तो होते रहेगी यार, है ना? चलते हैं, आ जाते हैं. It's been great. Okay. Chandan couldn't make it tonight's event. Yeah. Okay. I know. Okay. So who loves partying? What's the plan? Let me know. What's the plan for this weekend for everyone, for all of you guys? You have a long weekend over here now. I know you guys are busy with your colleges. You might be having your fest and everything. I want to know more about it. Tell me. I'm missing my college days. Okay, so it says Goa. hmm College classes, but how come classes during the weekends? I mean, like professors को भी तो छुट्टी होगी यार. Exams coming. Okay, Ayush, you better study, man. Exams लेकिन फिर भी आते आते रहेंगे. But have fun. Mm-hmm. Cool, cool, cool. Okay, so let's just mid-sems just over. Okay, get it. Got it. Okay, so I believe there will be more people joining us. So let's start with today's topic. So today's topic is about uh, careers in Web3. Now, I came across this fact that most of the people listening to me here at Bluelearn are from college students only. Like you are from college going students, and currently you might be in a very confused phase as in what to do, where to do, how to pursue it, how to have that catch and all that stuff. But believe me, this one part, man, being confused is fine. It is totally fine. You know, I believe being confused leads you to the right way, which is meant to set for you. You get it? Like I remember. I'll tell you my story later. I'm not sure whether I have shared that story with you or not, but just stay confused, man. Stay confused. मुझे पता है आप में से कुछ लोग होंगे who loves designing but is doing computer science. There are some people who loves marketing but doing mechanical engineering. There would be some people who loves event management but doing civil engineering. But you know, the thing is, find that inner calling. If I look at 5 years down the lane, ask this question to yourself that if I look 5 years down the lane, will I be happy doing what I am currently doing? है ना? अगर मैं सिविल इंजीनियर बन जाता हूँ तो मेरे पास पैसा तो होगा ही. थोड़ा सा ड्रामेटिक या फिर थ्री इडियट्स टाइप के जोन में साउंड कर रहा हूँ, बट पैसा तो होगा. बट विल यू बी satisfied with that? Because I came across this I'm very grateful to this. I came across this situation very early in my career life wherein I got to realize that no यार, मतलब जॉब तो कर ही लूंगा मैं, बट वो किक नहीं मिल रही है, वो मजा नहीं आ रहा है. So let's just try something which I like it. I can do it any time of the day, be it like late midnight, early mornings, whenever. But I feel like this is no work to me. This is just a hobby that I'm practicing. And I came across crypto, and I came across marketing. Then crypto was a plus because I was interested in finance. So I merged finance and marketing into each other. Then the growing field in finance was crypto. So I went into crypto, and yeah, that's the story. So that was how it is. But anyways, let's just start with it. So, are you guys up to know the careers in crypto? Hi, Kitretsu, it's good to see you back. Are you guys interested in knowing about the careers in Web3?
Yeah, just ping me. Yes, yes, yes. I want to see it. Spam it, man. Yeah, I want to see the spirit. Yes, yes, yes. Yeah, nice, nice. VC. Okay, Kitris is already interested in VCs. Okay, okay, okay. Teresa. Okay, nice, nice, nice. तो ठीक है. तो यार अब है ना क्रिप्टो में आने से पहले थोड़ा सा एक फ्लैशबैक एक थोड़ा सा रिवर्स में जाता है जहाँ पे ये समझते हैं कि हर इंडस्ट्री में एक होती है मेकर साइड एक होती है टेकर साइड. ठीक है. आई रिपीट दिस थिंग. हर इंडस्ट्री में एक होती है मेकर साइड एक होती है टेकर साइड. मेकर यानी कि वो होते हैं जो इंडस्ट्री बनाते हैं. बेसिकली दीज आर द इंडस्ट्री मूवर्स इन अ वे. होगा तो एक होता है बेसिक साइंस जिसके अंदर आप मतलब जिसके अंदर थोड़ा रिसर्च पार्ट ज्यादा होता है कि यार इसके अंदर आप और खोज करते जाओगे आपको कहीं कहीं एक चीज मिलेगी जो शायद ग्राउंड. दिस इज द रिसर्च पार्ट जहाँ डेवलपमेंट फेज आता है. माय वॉइस इज ब्रेकिंग अ बिट. ओके ओके लेट मी चेक. या श्योर श्योर श्योर. कैन यू हियर माय वॉइस नाउ? I mean, I have not done anything, but let me check. Can you guys hear my voice now? Okay, great, great, great. Yeah, these are my friends cooking food, so you might be having the voice from there. Okay, okay, okay. So, ठीक है. What was the last point that you got that you could hear? Just can you someone repeat it? मेकर टेकर. ओके ओके. यस यस यस. हर इंडस्ट्री में एक मेकर साइड होती है एक टेकर साइड होती है. ठीक है. तो मेकर साइड वो होती है जो जो है ना जैसे आपके फर्स्ट ईयर में साइंस होगा तो साइंस फिजिक्स होगा उसके अंदर होता है एक बेसिक साइंस एक होता है अप्लाइड साइंस. बेसिक साइंस वो होता है जिसके अंदर आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो उसके अंदर रिसर्च पार्ट आता है. रिसर्च पार्ट यानी कि you go into researching more and more. आप किसी चीज की एक खोज लगाओगे which could be ground breaking once in time lifetime and it could create history. So that is the maker side. जब टेकर साइड की बात करते हैं टेकर साइड हो जाता है अप्लाइड साइंस. अप्लाइड साइंस ये हर इंडस्ट्री में काम करता है. अप्लाइड साइंस में आपका काम होता है कि कोई एक डेवलप चीज है आप उसके अलग अलग एप्लीकेशंस निकाल रहे हो उसी के ऊपर डेवलप करके. करेक्ट. जैसे कि अगर मैं कहूंगा कि मेकर साइड में आ गए मोबाइल फोन तो टेकर साइड में आए एप्लीकेशंस. है ना. ये मैं बहुत ही बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि एक जो टेकर साइड आई. टेकर साइड में क्या होता है जैसे कि मोबाइल से मोबाइल के बाद एप्लीकेशंस आए एप्लीकेशंस ने उसके अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए एंड इट वेंट अपॉन एंड अपॉन एंड अपॉन. करेक्ट. सो अब आ जाते इसी चीज में क्रिप्टो इंडस्ट्री में. व्हाट हैपेंस इन क्रिप्टो? So there's a maker side. The maker side involves what you could say exchanges, then launch pads and stuff. लेकिन ये फिर भी मैं इंडस्ट्री का ओवरव्यू बताता हूँ. एक होती है यहाँ होती है डेवलपमेंट साइड विच मीन्स ब्लॉकचेन डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और what I could say is just a minute. Let me check if my connection is stable. Cool. Can you guys hear me? Give me a thumbs up. Come on. Coming right in 5, 4, 3, 2, 1, go. Thumbs up. Nice, Ayush. Bingo to you. Cool, 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 cool. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. Shahnawaz, I missed you, man. Nice to see you back. उदित पटेल, या थैंक्स. चलो तो उसी तरह से आपके आप थोड़ा एनालॉजी में जाते हैं. आईटी इंडस्ट्री में अगर मेकर टेकर साइड की बात करते हैं आई बिलीव यहाँ पे मैक्सिमम ऑडियंस जो होगी वो है ना यू वाइट बी परस्यूइंग इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दिस. सो आप इंजीनियरिंग की बात करते हो उसके अंदर मोस्टली पीपल आर इनटू आईटी एंड सीएसई इंडस्ट्री लाइक कंप्यूटर साइंस. सो उसके अंदर मेकर साइड कौन सी होती है जो डेवलपमेंट वाले होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स ये सारे होते हैं मेकर्स. टेकर कौन से होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं जो एप्स बनाते हैं कि इंटरनेट तो है ना. इंटरनेट तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्स है. आप उस रिसोर्स को यूज करके एक और एप्लीकेशन बना रहे हो. जैसे आप एक ऐप बना रहे हो आप एक वेबसाइट बना रहे हो या आप एक ऐसी सर्विस बना रहे हो जो इन दो लाइक ऑडियंस को जोड़ रही है. लाइक
एक तरफ पब्लिक है, देयर इज अ नीड, वो उस नीड को फुलफिल कर रही है बेसिकली. तो दिस इज द टेकर साइड विच इज सॉल्व. अब थोड़ा सा हम क्रिप्टो में आते हैं, ठीक है. अब वेब 3 की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा बाहर की बातें कर रहा था तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन अब वेब 3 में बात करते हैं. वेब 3 में मेकर साइड होती है ब्लॉकचेन कोर डेवलपमेंट, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट करियर्स. या सो व्हाट डू यू थिंक सो वुड बी द maker side of the crypto industry? Go ahead, I want to see the answers. What do you think will be the maker side of crypto industry? Launching a new Bitcoin is a maker side. हाँ, indirectly yes. Here indirectly yes. All chains like Ethereum, Polygon. नहीं, मुझे पटेल तुम थोड़ा सा भटक गए. हाँ, गीतांजलि you are right. Actually making cryptos. Mm, partially right. Bankless transaction, आयुष नहीं. Crypto projects with their purpose. नहीं 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 नहीं. चलो ठीक है, यहाँ पे गीतांजलि का एक आंसर थोड़ा सा सही था और हीर का भी थोड़ा सा सही था. मेकर साइड वो होती है. नहीं यार, तुम कॉइनबेस को आइडियलाइज कर रहे हो. ये तो ऐसा होगा कि तुम्हारे सामने गूगल है और तुम और एक गूगल की बात कर रहे हो. वो बात सही है, मैं उस बात पे एग्री करता हूँ. बट व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट द मेकर साइड इज व्हाट इंक्लूड्स एक्चुअल डेवलपमेंट यूजिंग अ रिसोर्स. ठीक है. जैसे कि आप, मैंने एनालॉजी पहले क्यों बताई, इंटरनेट है, आप इंटरनेट को यूज करके मेकर साइड में क्या बना रहे हो, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर बैकएंड डेवलपमेंट है. तो बेसिकली ऐसे समझो कि ये बैकएंड वाला वर्क है. फ्रंट एंड में कौन सा आएगा, ऐप, यूआई, यूएक्स, ये सारी चीजें आएगी. तो फ्रंट एंड यूजुअली लोगों को मजेदार होता है बिकॉज दैट इज अप्लाइड साइंस. इसके अंदर तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस है ना जो डेवलप चीजें हैं उसके और नए तरीके दिखाने हैं कि वो और कैसे अट्रैक्टिव दिखेगा. ये ऐसा तरीका है. तो ब्लॉक इसके अंदर होगा ब्लॉकचेन कोर डेवलपमेंट. लेट मी टाइप इट हियर. ब्लॉकचेन कोर डेवलपमेंट. गॉट इट. सो ब्लॉकचेन कोर डेवलपमेंट में क्या होता है, देखो. अब इंटरनेट है तो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने कितने टाइप्स के होते हैं. हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डू यू नो गाइस, कम ऑन, जस्ट लिस्ट डाउन द नेम्स, व्हाटएवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डू यू नो. आई एम लुकिंग फॉर दैट वन आंसर. 3. अरे नॉट द इन नंबर, कौन से आते हैं नाम, लिस्टेड डाउन. पाइथन, ओके, पाइथन देयर आर मेनी. हाँ, तुम्हें कौन से आते हैं इंडिविजुअली. हैश, ओके, आयुष नोज हैश, दैट्स लाई. व्हाट इज भाई लैंग, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस. हैश, पाइथन, सी plus plus solidity. Solidity, okay, Sriram, nice to meet you, man. Solidity developer. Many can't count. Okay, Python, Solidity, Java. Okay, okay, okay. तो ब्लॉकचेन कोर डेवलपमेंट में आता है डेवलपमेंट पार्ट विच इज यू नो अबाउट सॉलिडिटी डेवलपमेंट, रस्ट डेवलपमेंट. फिर इसके अंदर थोड़ा बहुत यूज होता है सी प्लस प्लस का भी. एंड देर आर सम टाइप ऑफ लाइक लैंग्वेजेस. लेट मी शो यू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस इन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट. तो ये इसके अंदर यूज होते हैं. सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज द कोर वेरी वेरी कोर डेवलपमेंट. ओके. अब इसके अंदर बेनिफिट क्या होता है, हाउ डू यू परस्यू. तो हम पहले मेकर से डिस्कस करते हैं. ओके, हम टेकर्स की तरफ बाद में जाएंगे, लेकिन एक बार मेकर्स डिस्कस करते हैं. तो ब्लॉकचेन कोर डेवलपमेंट में आपको रिक्वायर्ड लैंग्वेजेस कौन सी होती है, उसके अंदर एक तो एल्गोरिदम पता होने चाहिए बहुत सारे. कंसेंसस मैकेनिज्म होता है. आई एम नॉट अ डेवलपर बट आई जस्ट नो द ओवरऑल पर्सपेक्टिव. हैश फंक्शन, किसी ने यहाँ पे हैश लिखा था. सो या हैश डेवलपमेंट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ देम. या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, लाइक इसके बिना काफी सॉलिडिटी डेवलपमेंट जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं. फिर मर्कल ट्रीज, पेट्रिशा ट्रीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे है ना, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ इसके अंदर लाइक लैंग्वेजेस है तो जो यूज होते हैं. अब पैसों की बात करते हैं और हाउ विल यू गेट अ जॉब इनटू दिस. सो व्हाट आई बिलीव इज, यहाँ से आगे मैं जितने भी रोल्स मैं लिस्ट कराते जाऊंगा ना, यू कैन से दैट ये सारे रोल्स मोर और लेस यू कैन लर्न इट फॉर फ्री. Absolutely free. I believe, see, where I am today, YouTube is my biggest teacher. I've learned from YouTube and second from my experiences. YouTube ने मुझे वो सिखाया जो, which was out there into the world, and my experiences taught me what was not there in the world. Correct. And that is how everything works in the world. So remember this. जैसे YouTube पे जो दिख रहा है वो जो दुनिया को पता है वो दिखा रहे हैं. आप जो सीखोगे वो चीजें हैं जो शायद बाहर कभी दिखती नहीं है. And that is how I have learned. It's a mixture of both basically. Cool, cool, cool. तो अब आ जाते हैं. So
ट्रू लिखना चाहता था शायद आयुष. ओके ओके ओके, गॉट इट मैन, गॉट इट. तो इसी तरह से ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पे आते हैं. कोर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम. कोर डेवलपमेंट में क्या होगा, जो मैंने लैंग्वेजेस बताए, आप ये लैंग्वेजेस सीख सकते हो. ये यूट्यूब पे आप फ्री में सीख सकते हो. देन हाउ टू स्टार्ट योर करियर, और मेकर साइड और टेकर साइड सब में बता रहा हूँ. हाउ टू स्टार्ट योर करियर, द बेस्ट वे इज फ्रीलांसिंग. आई वुड सजेस्ट फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट वे टू किक स्टार्ट योर करियर. Nothing can be ever better than this. Yesterday night, I took an interview of a guy. Uh, if you remember, I told you about Aswa Ventures. It is a new startup of mine that I am starting off. It is again a venture capital firm, along with two co-founders of mine based in Bangalore, Kumar Raval and Mallikarjun Naidu. I'm starting off that. So that part, so that the person that I interviewed, he was in his college student. He was still studying his third year, and he had interviewed for a position of partnership manager role. Like that was a pretty big role, and he has got a very big, sufficient amount of knowledge. He has already been working at some place. So this was really impressive. That means he has been hustling for around 1 or 2 years previously, and he has got a sufficient amount of knowledge into crypto space. So that's how you can. What's the name of startup? Okay, that I'm working. Let me type it here. Aswa Ventures. Yeah, Aswa Ventures. So this is a wing of Aswa Labs that I'm starting, but more onto that on the later part. But freelancing in which domain is the best? So basically, यार मैं कहूँगा गगन, best domain. अगर आपको जो पसंद है आप वो कर रहे हो तो it is always the best part. Hit me up with a thumbs up if you agree. I'm speaking to Gagan right now. Yeah. अगर आपको जो पसंद है आप उसके अंदर कर रहे हो तो वो हमेशा ही बेस्ट रहेगा. उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता. आई लाइक मार्केटिंग, आई एम वर्किंग इन इट. हो सकता है एसक्यूएल डेवलपमेंट में मैं इन माय अर्ली डेज आई यूज्ड टू वॉच अ यूट्यूब वीडियो ऑफ अ पर्सन कॉल्ड जोशुआ. His name was Joshua something, and he was into SQL development, freelancing in that. He is a freelancer by profession. He creates YouTube videos. तो मुझे लगता था ये प्रोफेशन बेस्ट है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही है मेरे लिए, बिकॉज आई लाइक टू डू दैट. वो उसके लिए सही था. So the best part is subjective. Okay, how to learn Solidity for Web3. So that's what I'm saying. What you could do is go out on YouTube, search out for the best videos or best YouTubers. सबसे best तरीका होगा कि Google पे डालो best YouTubers for Python programming, C++ programming, Solidity और Rust development. So ये आप वहां से सीख सकते हो. एंड वो जो बेस्ट चैनल्स होंगे वहां से सब्सक्राइबर्स किसके है, सबसे ज्यादा एंगेजमेंट रेट किसका, लाइक्स किसके है, वो आपको जिसका पसंद आएगा वो आप सीख लेना. वहां से स्टार्ट करना. थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करोगे, फिर आपका पोर्टफोलियो बनाओगे तो फिर किसी फ्रीलांसिंग साइट पे लिस्टिंग करना. फ्रीलांसिंग साइट पे लिस्टिंग होगी तो वहां से काम शुरू करना. अपवर्क इज वन ऑफ द गुड वंस. फ्रीलांसर जो है वो इंडिया का है, वहाँ बहुत ज्यादा नॉइस है एक्स्ट्रा. आई एम नॉट पर्सनली इनटू फेवर ऑफ फ्रीलांसर. अभी और भी काफी होंगे. आई हैव बीन अवे फ्रॉम फ्रीलांसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, सो आई एम not aware of that. But yeah, these are some of the platforms where you can create your own. And the main thing in freelancing is to create your personal identity, personal brand, which you could create it using Instagram, LinkedIn. LinkedIn is the best source for that. You can generate leads also from there. So that is how you can get it. तो ये अलग अलग तरीके हैं. तो ये हो गई अब ब्लॉकचेन डेवलपमेंट. एंड नाउ हाँ, फ्रीलांसिंग के बारे में बात तो कर ली, लेकिन देयर वुड बी सम पीपल हु आर इनटू द जॉब्स. आर यू गाइस इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट जॉब्स इनटू development, like the core development, the maker side? Hit me up with some answers. Who is a job person over here who believes that job is one good thing that I could do? Great. So here goes one good thing for you. Create your account on AngelList. I just pinned AngelList over there. Hit a like on AngelList if you know it. If you don't even know it, still hit a like. I'll explain what AngelList is. Internships are a good way. Internships are a good way to get started. देखो, AngelList is a platform where the top FAANG companies like Facebook, Amazon, Netflix, Apple, ऐसे companies, Google वगैरह वहाँ उनकी hiring चलती है. So these are the top, this is the platform where the top companies open their hiring channels. So create your profile over there and create a personal identity on LinkedIn. Doesn't matter कहीं पे भी बना सकते हो, लेकिन एक पर्सनल ब्रांड वहां बनाओ जो आपके पोर्टफोलियो का काम करेगा into the outer world. And second thing, for a job purpose, AngelList is a best platform. I personally have been to the last second round of Spotify.
It was for the position of head of communications for APAC region, Asia Pacific and the MENA region. It was for that position from AngelList. I secured the position from AngelList only. I don't remember the name of that person. He was probably Jack or something ऐसा नाम था उसका. And he took my interview. And they chose someone over me in the last round just because of the time difference, because I was based in India and majority of the team was based in the Singapore region, जिसमें हमें शायद 2.5 से 3 घंटे का फर्क आता था. So yeah, they chose them and not me. But yeah, it's good. Yeah, AngelList. Yeah, that's the name. So AngelList पे आप सबसे पहले अपना account खोलो if you are a job person. Create a very nice profile and go ahead for hunting down job applications. There was a time when I was banned on AngelList for applying to so many companies at one single time that they had restricted my account, saying कि you cannot apply at so many companies at this one particular time. I was unemployed back then, but yeah, that's how I landed with Neutrap Capital as well. So yeah. So don't give up and keep trying. For freelancers, as I said, start freelancing, create a personal brand. For beginners as well who are looking for jobs, create a personal brand as well. I got selected for New Tribe Capital at a job posting which was done 3 months ago. 3 महीने पहले जॉब पोस्टिंग करके एक्सपायर हो गई थी. एंजल लिस्ट उसे प्रमोट भी नहीं कर रहा था. But I digged into it. I opened their profile. I went into reaching out to the founders, and yeah, that's how I connected with the founders today that I've been working on. So yeah, that's the story. But yeah, more on to that later. तो आप ऐसे एंजल लिस्ट को यूज कर सकते हैं. And believe me, why I'm saying angel list is you will be get paid in dollars. Believe me, you will get paid in dollars. Can you imagine dollars? Like यहाँ आप अगर आज करते हो तो आपका पैकेज कितना होगा? 3.5 स्टार्टिंग 3.5 LPA, 4.5, 5, 6, 7, 8 LPAs max. There your package will start from, I don't know, but somewhere around $40,000 to $100,000 for a beginner. So if I even take an average of 48,000, so the per month after deductions, it becomes around $3,000. $3,000 is like what, man? I don't know, but around 2.5 lakhs. Yeah, surely 2.5 lakhs. 2.5 lakhs per month. That will be your average salary. And if you try comparing that, let's just say that someone of you is interested in development, core development, blockchain, Solidity, Rust development. So the average pay is 60% above the average pay of a software developer guy in India. Yeah, in any kind of IT services. On an average, 30% hike than a software developer. So that's what the exposure is over here, and that's what the growth ratio is. Would they hire without a degree on AngelList? Abhay, I'm talking to Abhay right now and to everyone over here. Let me tell you, till date, I have not submitted my degree or my certification to any company that I worked for. Not even a single one. Qualification does not matter in this world, especially in Web3, never. I'll tell you, for Aswa Ventures, Aswa Labs, we were creating a website of Aswa Labs, one of the products of Aswa Labs, and that guy was from Chandigarh, and he was still in his 12th standard. I got connected with him in November. I had nothing to do with website development. I was not even looking at it. I just went upon that call just to see that guy. He was studying in his 12th standard and developing a website for us, and we were paying him around $50,000 to $60,000, 60,000 rupees, sorry, in INR. Yeah. 50,000 to 60,000 rupees in INR to a 12th grade guy for developing one single website, which he completed in around a month, not even a month, probably less than that. I don't know, probably in 3 weeks. Experience, I believe this comes from how you represent yourself. As a beginner, this is the most important part to how to justify your experience. But I can say that your experience can be from your personal brand. How much knowledge that you have into your stream. Your knowledge reflects your experience. Correct. Why are you guys listening to me today? Because I've got experience? No, because I've got knowledge. है ना? अगर मेरे नाम से head of marketing and New Tribe Capital का tag हटा दे, तो you will still listen to me. Correct? Because I have got that knowledge. So create knowledge, not experience. Experience will come over by. What if company pays in USDT and USDC? हाँ, वो तो if you are working in Web3, they will pay you in stable coins only. So what's the problem in that? Binance, आप WazirX को Binance से connect कर दो, they'll pay you on Binance account, transfer it to WazirX, sell it at the market prices. Here you get your money, and taxes का भी tension नहीं है. 30% tax, कहाँ का tax? 30%. टैक्स जो होता है वो आपका एक्सचेंज ही ले लेता है ऑलरेडी. आप जाके कभी देखना, एक ट्रांजेक्शन बना के देखो. लास्ट टाइम कवर किया था मैंने. नो टैक्स की बात नहीं है. आप अगर बैंक अकाउंट में भेजोगे तो आपको आपके
जो क्या कहते हैं आपके लेजर में, यानी कि आपके पासबुक में, आपके आईटी रिटर्न में आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा इस बंदे से आया, सो व्हाट वाज दिस फॉर, वाज दिस योर सैलरी, एंड इफ देयर इज दिस सैलरी देन हाउ कम आर यू एस्केपिंग द टैक्सेस. बट इफ यू गेट पेड इन क्रिप्टो यू कैन से दैट दिस इज द ट्रेड दैट आई टुक, not the salary, but this is the trade that I took and this is what I have been getting on and I don't need to pay the taxes. Because taxes already exchange पे कर देता है. मैंने लास्ट टाइम में पॉइंट कवर किया था. आप वजीर एक्स पे कुछ सेल करने जाओ आपको दिखेगा कि टैक्स ऑलरेडी पे हो जाता है. ऑन व्हाट बेसिस दे चूज अस. ठीक है, मैं ये सब मैं बताता हूँ, लेकिन आगे और थोड़े पर्सपेक्टिव कवर करते हैं. यहाँ पे हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. थोड़ा सा टेकर साइड में आते हैं. टेकर साइड में आ जाएगा ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द फ्रंट एंड डेवलपर, जैसे कि आपके यहाँ पे यूआई यूएक्स डेवलपर्स होते हैं, फिर एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन डेवलपर, लेकिन यहाँ पे फ्रंट सॉफ्टवेयर डेवलपर, ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपर्स. इसके लिए तुम्हें क्या सीखना पड़ेगा, तो आई कैन से एग्जिस्टिंग टूल्स एंड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी होता है वही लैंग्वेज होती है. बस आप जो मैंने कोर में बताई वही सब होता है, लेकिन ये थोड़ा ब्लॉकचेन एग्जिस्टिंग है, आप उसके ऊपर कोई चीज डेवलप कर रहे हो, बस इतना ही फर्क होता है इसमें. आपको मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं करना होता, आपको बस एप्लीकेशन डेवलप करना होता है. सो दे डू इट बाय वैसे. हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इज एन एप्लीकेशन, इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और dApps and deploying them on this. So again, they get on an average of 30 to 50% of hikes than a software developer. UI UX designer is perhaps मतलब I'll say कि अगर मैं शायद मार्केटिंग नहीं करता और मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं शायद UI UX designer बनता. It is so fun, like so fun. First thing, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स और सारे जो होते हैं दे डिपेंड ऑन द किस प्रिंसिपल, KISS. या सुनने में मजा आ रहा है, बट इट इज लाइक मेक इट इज सीमलेस. जो डिजाइन होती है ना, नियोमॉर्फिज्म जिसे कहते हैं, मेक इट सिंपल एंड फंक्शनल एंड फ्लेक्सिबल. So yeah, it is about that. Sorry if this is off topic. So it's not tier one college or college, that doesn't really matter. Your college never matters, never ever matters, man. I graduated from college based in Aurangabad. People don't even know what my college name is. They have never even asked me. That's what I said when it comes to entrepreneurship and freelancing. I'm talking about visa. Yeah, farak nahi padta. Anyways, how many of you are interested into designing? I want to know this. UI, UX, any kind of designing, any kind of graphic designing, UI, UX designing, whatever kind of designing. I would like to know your thought. Okay. Oh, who else? Gitanjali. Okay. Who else is up there? Nice. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो मैं बताता हूँ क्या होता है डिजाइनिंग पार्ट में, क्या होता है ये मैं बात बताता हूँ. एक होती है ग्राफिक डिजाइनिंग. आप अभी अभी देखो, अब क्रिप्टो में यानी कि वेब 3 में जो है, ब्लॉकचेन में, there's lot of gaming and metaverse boom. So there's a lot of colorful boom, I could say. तो यहाँ पे है ना बहुत सारी डायनामिक डिजाइन हो जाती है. बहुत डायनामिक डिजाइन यानी कि कैरेक्टर डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन डिजाइनर्स, मोशन ग्राफिक डिजाइनर, या फिर जो वो 3D इफेक्ट वाले देते हैं, वर्चुअल डिजाइनर्स, ये सारे इसके अंदर अभी बहुत ओपनिंग्स है. सो व्हाट यू कुड डू इज यू कुड लर्न सम काइंड ऑफ दैट स्किल व्हिच कैन हेल्प यू स्केल अप विद दैट पार्ट. करेक्ट. इसमें बहुत मजा होता है. अब देखो, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ इन सारों ने जिसने मी कहा है आई एम इंटरेस्टेड इनटू डिजाइनिंग, कलश, दार्थ वेडर, okay, your friend is interested, but yeah, there गीतांजलि, and whatever you guys are talking about. तो आपको फोटोशॉप तो आता ही होगा. फोटोशॉप से आगे जो आना है आपको, वो आपको सीखना है फिग्मा. मैं आपको बताता हूँ what you guys can learn is it is you know like you need to learn like Figma, Sketch, Adobe XD. Of course Adobe XD में तो सभी आ गया. फिर 3D मोशन वगैरह आप अगर सीखते हो, वीडियोग्राफी अगर सीखते हो, so these all are also cream jobs. UI UX designer is perhaps one of the best jobs, man. आप सोचो आपको एक कंपनी की वेबसाइट एक बार बनाना है. UI UX में है ना, फ्रीलांसिंग में सबसे बेस्ट करियर बनता है फ्रीलांसिंग में. बिकॉज UI UX डिजाइनर ऐसा काम है कि कंपनी की वेबसाइट एक बार बन जाती है, उसके बाद से तो सिर्फ अपडेट होते हैं. जैसे कि कोई नई चीज ऐड करनी है, कोई चीज रिमूव करनी है, बस वेबसाइट फिर से थोड़ी डिजाइन करनी पड़ेगी. ये तो वन टाइम काम है. तो कंपनी में यूआई यूएक्स डिजाइनर्स थोड़े कम ही होते हैं अगर क्रिप्टो में इट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट. अगर गेमिंग वगैरह है तो वहां पे तो यूआई यूएक्स की जरूरत पड़ती रहेगी. अदरवाइज फ्रीलांसिंग में यूआई यूएक्स का बेस्ट स्कोप है. और कंपनी वाइज देखो तो फिर कंपनी वाइज यू कैन गो फॉर मेटावर्स, गेमिंग, डीफाई बेस्ड प्रोजेक्ट, जहाँ पे यूआई यूएक्स डिजाइनर्स की कॉन्स्टेंटली जरूरत पड़ती रहती है. अगेन देयर सैलरीज आर, आई वुड से एवरेज यहाँ पे अगर 5 से 8 लाख रुपए है तो वहां पे 10 से 12 लाख रुपए होगी ऑन एन एवरेज. तो या प्रोडक्ट मैनेजर एक रोल है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा मैं ये
एक स्टेप अहेड वाला रोल है, मैं वो यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। प्रोडक्ट मैनेजर ये वो पार्ट आ जाएगा जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया, आपको पता है इंडस्ट्री हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन स्विच टू प्रोडक्ट्स। Okay, let me answer some questions over here. That is where we upload our work. You can use Behance if you are a designer. Again, your UI UX वगैरह आप जो भी कुछ हो आप Behance use कर सकते हो. So not a worry for that. How long it take to get first internship or first freelance project? Talking about quality of projects. Okay, because the resources are discrete. There is no complete courses. Exactly, exactly. Paras, I was at the same stage in 2020 when I had no knowledge, when I was unsure that resources क्या है, like I was not finding the correct resources to learn. But what I did was I just went upon searching. I was curious enough to learn more and more. Whichever YouTube video I would find, I would watch that. Whichever article I used to come across, I used to read it. And whatever kind of information, I used to connect with people on LinkedIn, get on a call with them to understand how the industry works, how they can help me, if they can get me an internship or something. Essay. So I never stopped trying. And this question, I don't feel this question is valid because there is no an average time. कोई एवरेज टाइम नहीं होता है फॉर मी. इट took me months and months. I don't remember, but yeah, more than 6 months to get my first internship. For job, this new type, it took me another 6 months to get my my desired job at New Type Capital. In the meanwhile, I had already left 6 jobs before New Type Capital because I was not satisfied at whatever place that I was working for. What you would say on entering the content creation space mixed with entrepreneurship? Definitely, it could work. Take an example of your founder itself, Harish. He has been creating content around entrepreneurship and building Bluelearn at the same time, and that has become a USP in itself. And that has got Bluelearn so much of fame, I believe. How the advertisements based on our data is going to work in Web3. Shanawaz, this is a little bit off topic from the current discussion, but I shall answer that definitely by the end. So, is it really helpful or not? As college is encouraging us to review research articles and we are doing our own research publishing an article. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम कॉलेज की बिचिंग कर रहे हो क्या हरितिया? मैन आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट इफ दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू विद योर कॉलेज. बट अगर रिसर्च आर्टिकल्स के ऊपर है तो डेफिनेटली इफ इट इज योर इंटरेस्ट, आपको आपको इंटरेस्ट है उसमें तो करना. इफ इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन जस्ट लेट इट गो. As in Web 2. Okay, okay, okay. Let me forward. So is it something we should do or not? That's my question. You should. That's what I said. No, if it is of your interest, you should definitely do it. If it is not of your interest, then you should just like skip it या फिर करना है इसलिए करना है because उसके भी आपको grades वगैरह कुछ होंगे and you should not mess on to your grades, right, man? वो आपके overall curriculum पे effect करेगा if you are a job person. You said you asked people to get on a call with you on LinkedIn. How would you convince them to get on that? काफी मुश्किल होता था. एक मैंने pitch note create किया था. There's a freelancer named Naval. I don't remember his second name, but Naval is his name. I follow him on LinkedIn. I don't remember his second name, but he is a freelancer by profession. He's an amazing guy. So he takes courses on freelancing, how freelancing is done and everything. So I used to find it up. Bitching out college. Let's do it together. Yeah, let's do it at the end, man. ठीक है ठीक है ठीक है. मैं बताता हूँ. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू फॉलो हिज न्यूज़लेटर और वहां से मैं एक है ना पिच टेम्पलेट सीखा था, लाइक हाउ टू पिच पीपल ऑन लिंक्डइन फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग. तो वो मैं पिच टेम्पलेट भेजता था और उसको बाद में मैंने मॉडिफाई किया ऑफ कोर्स एज पर माय नीड. एंड देन आई यूज्ड टू कीप मैसेजिंग देम. मुझे ऐसा था कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, यानी कि वो ऑलरेडी Naval Ravikant, probably firstly IG. Yeah, Shayad, I don't remember exactly. I don't remember. It's like Naval only. But ठीक है. I used to go up with this thinking that ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाए. Anyhow, this person does not know me. If I message him constantly, at certain amount of time, at one point of time, either he'll get frustrated and reply me back, or else he'll just remove my connection. Anyhow, we don't know each other. We have not seen each other. क्या ही फर्क पड़ेगा? Use the Bumble or Tinder strategy, guys. Come on. I see most of the people over here are boys, so I can say this: use the Bumble or Tinder strategy. Like, if it's a match, go ahead and talk it. If it is not, just leave it and move on with the next one. You laughed out, but I think you're the right person to know this. I have little interest in marketing, so what are the roles in the field of exactly here? Exactly, I would love to talk on marketing. I'm a marketing guy. Naval, that's what I'm saying. Naval Ravikant is the co-founder of AngelList. Shayad.
He's not Naval Ravikant. I'll tell you the name, man. I'll tell you the name. I used to follow him. I don't follow the newsletter right now, but yeah, I'll tell you. Have you made any NFTs? No, no, man. I'm not into NFTs. Spain. ठीक है ठीक है ठीक है. Let's switch to the next course. अब आते हैं next course is into taker side. Again, product manager को मैं skip कर रहा हूँ. It is not a role of your purpose as of now. Let's go into marketing and sales. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. So would you guys be interested in knowing about the VC part or मतलब yeah the venture capital part? Yeah, the other part, that is the marketing and the usual stuff. Which part? Come on, come on. I need to see the things. Both. Okay, Kalash, you want to know both. Marketing. Okay, Naseem, marketing. Okay. Where are other guys? Where's okay, Kitretsu's not there today. Okay. VC part. Okay, okay. Marketing. VC, 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 VC. ठीक है definitely definitely definitely. देखो यार, मैं एक VC के बारे में एक बात बताता हूँ. VC करियर तब करना जब तुम्हें लगेगा कि अब लाइफ में बहुत हो गया, अब चिल करना है. यू नो लाइक अब पैसा मतलब इमेज बनानी, पैसा तो बना, लेकिन अब चिल भी साथ में करना, ये तब काम है. लेकिन इसके अंदर यू हैव टू फाइंड योर ओन चिल. लेट मी टेल यू, आई एम राइट नाउ टॉकिंग टू, आई एम गेटिंग स्टिल मैसेजेस फ्रॉम लाइक those projects and companies for investments and stuff. So it is pretty hectic. There is no work timing, be it in any industry. VC, crypto VC हो जाए या कोई भी VC हो, there is no particular time of working. आपको रात को भी कॉल करना पड़ेगा, दिन में सुबह जल्दी भी करना पड़ेगा, बिकॉज द टीम्स विल बी बेस्ड एनीवेयर. और फाउंडर को जब टाइम होगा, जब आपको टाइम होगा तब आपको कॉल देना पड़ेगा. दैट्स अबाउट VC पार्ट. बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मार्केटिंग. दिस इज माय फेवरेट पार्ट. मार्केटिंग से पहले जस्ट 2 minutes ब्रेक. लेट मी जस्ट ड्रिंक वाटर. इन द सेम टाइम आई वुड लाइक टू नो, what do you guys think? Listen to my question very carefully. What do you guys think will be the major roles of marketing into Web3 and crypto? Just shoot your answers into the chat box ahead. I'll just come, drink water, I'll come, and I would like to answer all of them. What do you think the major roles would be into Web3 in marketing? Come on, go ahead. Set. What's up? Pitching virtual real estate. Where's the answer? Promotion and awareness. Trust. ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? You have been offset from the topic, guys. Right now, Twitter is playing major role by promoting IG, not a marketing guy. Okay, okay, okay. Selling NFTs, community managers. Yeah, yeah, yeah. तो देखो, अभी recently, since we are talking about Web3 and stuff, everything is on the way of getting decentralized. Community management is supposed to be a part of marketing. It has always been a part of marketing, but lately, community management has become an entirely different role, an entirely different field. Community management means engagement, content creation, and basically a mix of all of that. That means you have to be always on the toes. यानी कि किसी ने कुछ सवाल पूछा तो उसका जवाब देना, किसी की कुछ क्वेरी होगी तो सॉल्व करना, किसी को किसी से कनेक्ट करना है तो टू बी ऑन योर टोज टू कनेक्ट देम टू द राइट कंसर्न पर्सन. और ये सारी चीजें होती हैं. कीप द कम्युनिटी एंगेज. ऑफ कोर्स कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं. शायद इसके बारे में मुझसे ज्यादा अच्छे से आपको आपके कम्युनिटी मॉडरेटर्स यानी कि यश, चंदन एंड दीस पीपल कैन टीच यू अबाउट इट. बट या, I think the topic has been good. Can you guys hear? Can you guys listen to me? Can you guys hear me?
Am I audible? Give me a heads up. I want to see the spirit. What's up? How you guys have been off track? Come on. Cool. You can loud and clear, boss. Great. Okay. चलेगा. आगे आते हैं आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Web3 यानी इंडिया बेस्ड Web3 स्टार्टअप काफी है यार, काफी है, बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें. चलते मैं मेरे लिस्ट मेरा जो डेटाबेस है उसमें से बताता हूँ, काफी मिलेंगे यार. आई एम नॉट रियली. डोपामाइन एक है, इट इज अ वेरी रिसेंट वन, काफी है, मैं बताता हूँ तुम्हें. बट ठीक है. चलो. सो वी वर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी एंगेजमेंट, तो उसके बारे में मैंने बता दिया. इट इज अ वेरी गुड करियर टू स्टार्ट इफ यू गाइस यू आर इन योर कॉलेज टाइम, एंड इफ the only thing that you need to do is gain a little bit of knowledge about community management and crypto and how things work over there. You can easily secure a job of a community manager on any kind of crypto project. ठीक है. दैट इज वन पार्ट. अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में. सेकंड पार्ट है मार्केटिंग ना, कोर मार्केटिंग. यहाँ पे मार्केटिंग होती है, देखो ज्यादातर यहाँ पे मार्केटिंग जो होती है ना, अगर आप, मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है बहुत ही वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है. ओके. सौरभ, प्लीज स्टॉप सेंडिंग मी मैसेजेस इन प्राइवेट. वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर. ओके. लेट्स जस्ट हैव अ डिस्कशन ओवर हियर राइट नाउ. ओके. कूल. तो या पहले आप बात करते हैं मार्केटिंग कोर के बारे में. कोर मार्केटिंग में यहाँ पे आ जाएगा, देखो मैंने जैसे बताया, क्रिप्टो इज अ वेरी वोलेटाइल इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी डायनामिक. तो हर 6 मिनट में एक प्रोजेक्ट इज बीन लिस्टेड ऑन कॉइन मार्केट कैप और कॉइन जेको. दीज आर द वर्ल्ड्स टॉप लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस. Not exchanges, but crypto analysis tools, I would say. So, in such kind of volatility, how can a project survive? It has to be really unique in terms of its USP and MVP. Like the product needs to be really strong. So, when it comes to that part, and talking about crypto, it has always been about the organic marketing reach. So when it comes to organic part, always remember organic marketing sticks to content creation, social media marketing, and what you could say partnerships also when we are talking about crypto. Correct. Yeah. And later part, let's just say that the project has been grown, थोड़ा सा बढ़ गया है. तो ऐसे टाइम में जो होगा ना आपका प्रोजेक्ट, अब इन ऑर्गेनाइज की पेड मार्केटिंग की तरफ जाएगा, जहाँ पे ऑलवेज अबाउट पीआर आर्टिकल्स, न्यूज, मीडियाज एंड ऑल दैट स्टफ, बाइंग एंड रेंटिंग मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, ये सारी स्टफ. तो दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ मार्केटिंग. एक थर्ड पार्ट ऑफ मार्केटिंग है जिसका काम मैं करता हूँ. आर यू गाइस इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ मार्केटिंग इन क्रिप्टो? Yes, story about Cyan. Yes. That is the partnership stuff. दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ पार्टनरशिप. यहाँ पे आपको आपके नेटवर्क्स का यूज करना है, बिलीव मी. यानी कि एक वेंचर कैपिटल में हो तो प्रोजेक्ट्स को लाना है, एक प्रोजेक्ट में हो तो वेंचर कैपिटल्स के साथ पार्टनरशिप करना है, प्रोजेक्ट में हो तो एक्सचेंजेस के साथ पार्टनरशिप करना है, लॉन्च पैड्स के साथ पार्टनरशिप करना है, केओएल्स यानी कि की ओपिनियन, बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स को केओएल्स कहते हैं इन द क्रिप्टो वर्ल्ड. सो केओएल्स एंड इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, इनके साथ पार्टनरशिप करना है, इन्हें ऑनबोर्ड करना है. सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ मार्केटिंग. दिस इज द ब्रांड मार्केटिंग. दिस इज द पार्टनरशिप मार्केटिंग. Here your job is to connect with people as much as you can, and grow your ecosystem to the maximum of it is possible. Correct. And that is how it is exactly about. So this is what I do. I do the partnership stuff. I usually connect with the upcoming, emerge in our upcoming projects into the crypto space, and then the team takes a call of whether or not we shall be investing in it. So that's how it goes. So that is the third part of marketing. Did reading books impact your progress anyhow? Abhay, honestly, I'll tell you, till date in my life, I've never ever completed one single book of reading. यानी कि किए होंगे, but I don't really count them into completing a books into reading. So that is how it is, man. So हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी होती है. मैं देखता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, देयर आर लॉट ऑफ आइडल्स दैट यू आइडियलाइज. ऑनेस्टली दीज आर बिग पीपल, बट यार वो उनकी आइडियोलॉजी है. बुक्स, रीडिंग बुक्स, एंड दे दैट हैव हेल्प्ड फॉर देम, दे हैव कंसीडर्ड देम एज देयर मेंटर्स. But for me, something else has acted as mentor for me. So yeah, I think it's more like the main point is consume the right content. हाँ, right content भी, and which one do you choose to believe in? For me, books have not worked. That has not been consistent, so I switched to videos, and videos work very well for me. I switched to real people, like connecting. As I said, I used to connect them on LinkedIn and gain some connections from the industry, and that's how I went upon and upon. So yeah, वो मेरे लिए ज़्यादा काम किया. Ah, Yash, nice to, yeah, we really match, Yash. So yeah, that is about it.
So yeah, marketing is all about that part. एक मैंने बताया कंटेंट क्रिएशन, ऑर्गेनिक ग्रोथ वगैरह वगैरह. सेकंड जो कम्युनिटी मैनेजमेंट, जो एक्चुअली मार्केटिंग का पार्ट नहीं है लेकिन मैं अभी के लिए कंसिडर करता हूँ, तो कम्युनिटी रोल. थर्ड हो जाता है जो पीआर मीडिया. इस यहाँ पे रोल्स होते हैं हेड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशंस लीड, पीआर लीड, पब्लिक रिलेशंस मैनेजर, समथिंग लाइक दिस. So these people look after the media stuff. I'll share my LinkedIn yeah, later on. Get it? I'll share my LinkedIn at the end. ओके, और आगे आते हैं. अब इसके अंदर थोड़े कुछ रोल्स है, पता नहीं आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो गए कि नहीं. द वन वन पॉइंट काइंड ऑफ रोल इज लॉयर्स. Lawyers are, as in what I could say, legal बहुत help लगती है for any blockchain and crypto startup, since there's a lot of buzz around it, there's a lot of irregularity around it, so there's a lot of help that is required from the legal perspective based on the projects and which country and which governance it is based in. तो lawyers की यहाँ पे जरूरत है, legal consultants कहते हैं इन्हें. हर कंपनी का एक legal advisor जरूर होता है, just to ensure that they don't run into malpractices. फाइनेंस की बात करोगे तो टोकन लिस्टिंग, फंडिंग, इफ समवन इज वेरी गुड एट नंबर्स, सो यू कैन बिकम अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अकाउंटेंट्स. लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस और नॉलेज लगेगा, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे पैसा इज इन्वॉल्व, यू नो, लाइक एक्चुअल मनी कम्स इन, है ना. तो वहां पे आप नहीं कर सकते हो. Pain, yeah, haven't you read even one book? No, I have read many books. The Psychology of Money. I have read Yoganand Paramahansa Yoganand's book. There have been, yeah, Wings of Fire, Invincible Mind, many books. Usually not novels, but the books that that were really kind of helpful. By the way, I write poems, so I'm kind of a poetic guy. So I read literature and that part of stuff. बट ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो हम यहाँ फाइनेंस और लीगल की बात कर रहे थे. तो इसका बेस्ट तरीका है कि यू गेट यूज टू नंबर्स, यानी कि सम अमंग ऑफ यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइक मनी दैट इज इन्वॉल्व, जैसे कि हाउ मनी वर्क्स, इन्वेस्टिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, देन CAC, कॉस्ट एक्विजिशन, ये सारा जो स्टफ होता है ना, ये सारे नंबर्स में जो इंटरेस्टेड होता है उन बंदों के काम का होता है ये टोकनॉमिक्स और पार्ट. आप बहुत अच्छे बिजनेस एनालिस्ट या फिर क्रिप्टो एनालिस्ट बन सकते हो. सो दैट इज वन पार्ट. फिर से अगला आता है बिजनेस डेवलपमेंट. दिस इज माय इंटरेस्टिंग पार्ट. देखो, बिजनेस डेवलपमेंट की बात करता हूँ. आर यू गाइस विथ मी? आर यू गाइस लिसनिंग? आई वांट टू नो. आई ओनली नो पॉलीगॉन एंड ओपन सोर्स टेक. आर यू गाइस लिसनिंग? या. Yeah, we are about to conclude on our last role that I believe is there would be many other roles as well, लेकिन वो इंडस्ट्री, क्रिप्टो में भी अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज वेरी करेंगे, बट अभी के लिए इट इज द लास्ट रोल. बट yeah, are you guys interested? Come on. Yes. Okay, good. Let's talk about it. Okay, cool man, cool. चलो थोड़ा सा समझाता हूँ अब इसे. लास्ट रोल इज बिजनेस डेवलपमेंट. जो हर कोई हो सकता है, हर कोई इस रोल से थोड़ा भागने का देखता है. उन्हें लगता है कि यार बिजनेस डेवलपमेंट मतलब क्लाइंट्स लाना, लोगों को बेचना किसी चीज. फॉर माय फ्रेंड्स व्हेन आई स्टार्टेड मार्केटिंग, दे यूज्ड टू कॉल मी कि आप तुम तो साबुन बेचते हो. You go door to door to you people are might be selling soaps and door to door marketing, but this is not how world works. Business development is ultimately the most important part in a company. I would say most important, because अगर business है तो ही आपका startup है, जो भी कुछ है वो survive कर पाएगा. You need recurring customers. You cannot survive onto existing ones. Existing ones can die out very soon. You want recurring customers. Okay, retention, user retention अलग बात होती है, लेकिन आपको recurring customers ज्यादा जरूरी है. तो when you talk about business development, एक लाइन, एक स्टेटमेंट कहूंगा. Let me know if you guys agree on this. No matter which team we are working in, we are all in sales. No matter which team are we working in, we are all in sales. Hit me up if you guys agree to this. Yeah, we are all in sales. हम अल्टीमेटली कर किसके लिए रहे हैं? हम कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहे हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी है तो क्लाइंट लाने के लिए कर रहे हैं, सर्विस बेचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हम बेच रहे हैं. रिमेंबर दिस. वेंचर कैपिटल, यहाँ थोड़ा सा मैं ऑफ टू देता हूँ. वेंचर कैपिटल इज ऑल्सो अबाउट सेलिंग. What do we sell? We sell our services, we sell our investment. Okay, just imagine, man, you have a startup that is on seed stage, upcoming early stage startup, and it has got a kick-ass product, a kick-ass service that you are putting, probably one of the best into the industry. At this point of time, you have hundreds of VCs lined up
who wants to invest in your startup? Who will you choose? I want to know the answer. I want to know the answer. Who will you choose if you have so many people lined up to invest in your company? Who brings value? Exactly, who brings value? पैसा तो हर कोई दे रहा है, ये तो बोली लगाने जैसे हो गई. हर एक बंदा आके कहेगा कि मैं आपको ओके, आप कहोगे कि 30 million valuation, he'll say at 50 million valuation, someone will say 60 million valuation. वैल्यूएशन बढ़ते जाएगी, टिकट साइज बढ़ते जाएगा, आपको पैसा और के और मिलेगा. But what matters is the value that they are adding. So yeah, what we are selling is, as a venture capital firm, we are selling value. What is the value addition? At our VC firm, we sell, or I would say not sell, sell is not the right word, but we provide 16 types of different valuation, different value add, which could be tokenomics, legal, accounting, as I said, marketing, KOLs, influencers, PR, media, all kind of value add, whatever you say. So that is how value add works. Okay, so that is about it. तो बिजनेस डेवलपमेंट इज दिस पार्ट. अगर आप क्रिप्टो में किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो तो बिजनेस डेवलपमेंट का काम होता है बेसिकली पार्टनरशिप के जैसा ही होता है थोड़ा सा. मैं अज्यूम करता हूँ कि आपका एक लॉन्च पैड है, तो लॉन्च पैड का काम होगा और प्रोजेक्ट्स लाना. तो ऐसे वक्त में बिजनेस डेवलपमेंट यानी कि जो बीडीएम होगा, बीडीएम इज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, उसका रोल होगा और नए प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट करना. वो जितने नए प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट करेंगे उतना उनके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, उतने वो लॉन्च पैड्स पे लॉन्च करेंगे एंड उतना उन्हें बिजनेस मिलेगा. अगर एक्सचेंजेस है, वजीर एक्स, अच्छा चलो यहाँ आ जाओ. वजीर एक्स के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जो होगा उसका क्या काम होता होगा? व्हाट इज द रोल ऑफ अ बीडीएम एट वजीर एक्स? आई वांट टू नो द आंसर्स. गो अहेड, शूट. मुझे जस्ट टाइपिंग. ओके, आई एम वेटिंग. कम ऑन, आई वांट टू नो द आंसर. गीतांजलि, कम ऑन. यस 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 यस. He is also typing. Okay, everyone's typing, but I don't see any answer. Listing crypto. Yes, listing crypto is the thing. Yes, exactly. Shanawaz, bingo goes to you, but I would also like to know your answers, guys. Here, Mudit. Yeah. अच्छा, नियर प्रोटोकॉल के बारे में किसी ने सुना है? नहीं यार, ये वाले नाम के बारे में सुना है किसी ने? एक इनसाइडर न्यूज देता, चलो. आई एम नॉट अलाउड फॉर दिस, बट एक इनसाइडर न्यूज देता हूँ मैं. We have partnered with Near Protocol for $5 million, and the news will come out by this weekend or the next, by the start of the next week. Okay, yes, you got profits in that. Nice. अभी उसके और बढ़ेगा वो. Okay. Now, no worries, man. No worries. Profit really doesn't matter कितना आया. The thing is that you invested. The partnership news will come out very soon. We are busy at Paris Blockchain Summit, every one of us. So we are yet to finalize the final terms. But yeah, the PR, the media, and everything is ready, and they are just waiting for our confirmation. We have partnered with them for $5 million. We'll be investing into Near Protocols project alongside with Octopus Network, and yep, that will happen soon. So yeah, you can expect a little bit of a bump in Near Protocol very soon. So yeah, so Near मैंने इसलिए कहा क्योंकि I remember Near बहुत ही recently किसी एक exchange पे list हुआ था in India. Was it CoinSwitch or I don't remember, लेकिन I heard the news on some kind of yeah, redoing inside trading now. ऐसे मत कहो यार, this makes me feel guilty. This is not insider trading. I'm giving you some insider news. Okay, have some fun. Yeah, this is not insider trading, man. This is some insider news. Have fun, make some profit back. Go ahead. चलेगा. तो ठीक है. सो नियर प्रोटोकॉल जब किसी पर लिस्ट हुआ था, तो वजीर एक्स पे अगर लिस्ट होता है तो उसका जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होगा, उसका काम होगा टू पार्टनर विद दिस गाय, टू हैव अ लुक, यू नो, टू एक्ट एज अ पार्टनरशिप लीड between these two companies, वजीर एक्स and नियर, and to see whether or not they are investing, whether or not what they are doing, whether or not what will be टर्म्स. यानी कि वो एक्सचेंज तो कर लेंगे, लेकिन फिर जो रेवेन्यू मॉडल होगा, उस रेवेन्यू में से वजीर एक्स को कितना मिलेगा, नियर को कितना मिलेगा. लिस्टिंग सक्सेसफुल भी होनी चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है लिस्ट होते से कॉइन एकदम से धड़ाम से गिर जाता है, वो नहीं होना चाहिए.
sellers, buyers and sellers होने चाहिए. WazirX में उतनी hype बनानी चाहिए ताकि people should actually go and WazirX and buy near protocol. अगर वो खरीदते नहीं है तो क्या होगा? Okay, Getis is asking this question again and again. It is near, man. Bringing volume. हाँ, volume का मतलब वही होता है, hype होनी चाहिए ना. आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, हाइप होनी चाहिए लोगों में. अगर WazirX बहुत न्यूज बनाएगा, सोचो ना, अगर धीरे से आके WazirX एक दिन में कह देता है, मतलब आज सुबह कहता है शाम को नियर प्रोटोकॉल लॉन्च हो रहा है, और लॉन्च हो गया, लोगों को पता ही नहीं था कब लॉन्च हो गया, कैसे लॉन्च हो रहा है, कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा. लेकिन बट ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम हैंड, इफ दे क्रिएट अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ हाइप, तो वहां पे बायर्स और सेलर्स उतने होंगे, यानी कि उतनी लिक्विडिटी होगी, उतनी लिक्विडिटी होगी तो वॉल्यूम होगा तो मार्केट कैप बढ़ेगी, मार्केट कैप बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, प्राइस भी ऊपर जाएगी. 1% TDS skills. Yeah. So this is about the business development role. बिजनेस डेवलपमेंट रोल का थोड़ा बहुत पार्टनरशिप जैसे ही काम होता है, लेकिन उनका जो मोटिव होता है वो पार्टनरशिप कम एंड रेवेन्यू मॉडल की तरफ ज्यादा होता है, दैट हाउ अ पार्टनरशिप कैन बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. सो दिस इज अबाउट इट. Okay, guys, so I am done from my end. Go ahead. If you guys have any kind of queries, questions, please feel free to shoot it. Here we go ahead with our Q&A, question and answer session. Come on, I want to know questions, whatever guys, whatever you have in your mind. Come on. Any kind of questions, man. Any kind of questions. Acha, also, let me tell you, this may be probably our last session at Bluelearn, because from next week onwards, I believe I have covered most of the points and I have left with no other point to discuss in our entire session. But yeah, from next week onwards, again, I am not available, and you have got enough amount of information. Feel free to connect with me anytime, anywhere. But yeah, right now I want to know what are the thoughts, what are your queries, what are your doubts that you would like to know. Best book to know about finance. Man, as I said, I'm really not a book person, so I may not be the right person to assist you with which is the best book. But yeah. Here, get us your typing. Okay, come on. I am here for the last 5 to 10 minutes. I want to know the best questions. Whatever, कुछ भी सवाल तुम्हारे दिमाग में आएंगे, पूछो यार, पूछो. What is the best skill which a starter is required to join any crypto startup? What kind of person are you, Getis? If you want a little bit into marketing side, यानी कि जहाँ आपको exposure मिले, लोगों से ज्यादा connect करना है, तो ये taker side में जाना. अगर तुम्हें लगता है you are good at development side where you can work individually, जहाँ पे you are good at developing, basically creating things, तो आप development sides में जाना, यानी कि the maker side. तो अगर मेकर साइड होगी तो जैसे मैंने बताया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूआई यूएक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह, और टेकर साइड होगी तो वहां पे फिर मार्केटिंग, लीगल एंड पार्टनरशिप, ये सारे स्टफ आते हैं, कम्युनिटी मैनेजमेंट और ये वगैरह. एंड assuming that you are a college student, for me the best thing could be learning about marketing or community management. Community are the next future for sure. I am in high school. You are in high school. Okay, then the community is the best thing. Then community is the best thing. You can go ahead and knowing more about how community management is done. What are the nitty-gritties? What are the pros? What are the cons? How can you secure a position into community management and all that stuff? Yeah, I get it. So that is my personal advice. Rest, feel free to choose what is best for you. How did your VC journey started? A bit about your freelancing journey. हाँ Geetanjali, I'll tell you about that. I'm into marketing roles. Managing the social media is the right job to learn about marketing. Yeah, it is a good job, but try to explore more. If you're managing the social media, so I assume it would be a startup. So try to look onto from a bigger perspective. If it is a startup, how can you help the startup grow other than social media? Social media is not the only thing in marketing. वहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है. वहाँ पे इनबाउंड मार्केटिंग हो सकती है, वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, वहाँ पे पीआर मीडिया मार्केटिंग हो सकती है. तो ये सारे मार्केटिंग जो होगे वो आपको सीखने में, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है वो देखना, कंपनी को बिजनेस लाने में, और आप कैसे मदद करते हो. बेसिकली मार्केटिंग करते क्यों? सेल्स जनरेट करने के लिए, और कैसे सेल्स जनरेट होगी ये सोचना, एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रोसीड विद. So that would be a good place. So try to look for it from a bigger perspective. It may be help you. I have been onto that place. I used to manage social media for a startup, and yeah, after that I grew up here. So yeah, this is one for you. What happens exactly in community management? Yeah, Siddhant, I just covered it a while ago. So I would like to focus on something where to learn community management. Community management में आपको बहुत सारे जैसे कि मैंने बताया, the best thing that you can learn it from your community mods, that is Yash,
चंदन वो आपको बता देंगे. If not, try looking out for some more YouTube videos, some articles that can help you with that. Okay. I don't have any particular name in mind, but yeah, YouTube and these places and LinkedIn से वगैरह आप connect कर सकते हो to the right people. He nice, nice. Thank you so much, Heath. Thank you so much. Let's go ahead, get his Ayan. Some last questions from your end. Yash, you can just join in. We can, we can just conclude the conversation. Yep. Anything that Yash, I would like to know from your end. Honestly, guys, Yash is the guy that I have least spoken with. I have been very much in talk with Chandan and everything. But Yash, this is the time that I would like to know about you, man. Come on, go ahead. Just talk something that you might be having some doubt, some query. I would like to know that your interest. Come on. Mm, mm, okay, okay, okay. Okay, so yeah, yeah, no problem. That's good. As I said in the beginning, also, it's good to be confused. Okay, so are you guys interested in knowing my story? The very last, I would like to conclude it with my story in very short, as in, because I like the question which this get is asked. When did you get into crypto at what time? So this is really interesting question which I like to answer. Ready? Whoever these 25 people are listening, doesn't matter. I want to know your thoughts. Are you interested? Come on, hit me up. Cool, cool, cool. ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ तुम में से ज्यादा लोग फर्स्ट सेशन पे नहीं थे. मैंने ये बताया था थोड़ा सा, बट अब थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ. In 2018, I started my first startup with my friend. Then in college, bench partner, project partner, everywhere. He was a good friend mine. We started Yellow Bags. It was into the apparel based industry. हम क्या करते थे, हमारा बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अजीब ही था, बट अभी अजीब लगता है, तब तो बहुत पैशनेट थे उस चीज के लिए. इट वॉज अबाउट लाइक द आउटफिट्स एंड एवरीथिंग दैट द पीपल वेयर. वी यूज्ड टू सेल them and we used to trade them into the open market, and that was our business model was. But it didn't go through very well, and Yellow Bags was not a great success. We had some legal issues, so we had to shut down our operations very soon. 2019, I was learning about freelancing, blockchain and stuff. Lekin itna actively nahi. I was busy with my college. In 2020, I met my second co-founder, Vikram Dhoot. He was again an alumnus of our college, and pretty bad. Now imagine a guy in his 40s. He was running already his two companies, and this was his third company, Neurotech Design, which he was thinking to start it off, kickstart. And he was hoping for he was looking for some kind of guy who can, just look onto the marketing part. And he was a total development or product geek. And yep, that's how we happened to end up together. I connected with him through LinkedIn. Again, I'm saying I connected with him through LinkedIn, and that's how our journey started. So it was in the beginning, it was only three of us. I used to manage very basic stuff of like social media and all that part, but it was fun. Our product was very strong. We were, focused into the healthcare, wellness, and IT sector. We were trying to create a product which could serve as a wellness and IT wellness based product for an entire home appliance. जैसे कि Google Home और Alexa होता है ना, वैसे ही था, but it was more into the wellness part, like the digital well-being, sleep monitoring, your blood pressure, heart rate monitor, all that stuff. But one product would serve for an entire family of four people. So that was the product for. So I joined them in 2020 in the COVID period. I was there with them for 1 year and 4 months or something, and then I had an exit. So by the time I had an exit, our company grew from four people to 18 people a team, in which my marketing team itself consisted of around 7 to 8 people. Though most of them were like interns or part timers, but yeah, we used to keep this, and we were totally bootstrapped, no funding, nothing, bootstrapped, and from our both two other companies. So this was back then. But सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज, हाँ यार काफी टफ पार्ट था, बट या वी समहाउ मैनेज्ड. मुझे भी तो सैलरी मिल रही थी, बहुत बेसिक मिलती थी, बट लेकिन चला लेते थे बिकॉज कोविड था. एंड आई वाज इंटरेस्टेड इनटू दिस, एंड आई वाज इन द फेज कि यहाँ जहाँ. अच्छा, एक और बात बताता हूँ, चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ तुम्हें. In 2020, the year which I graduated, March is when the lockdown did hit. So before the lockdown, in the very first week of March, I got a job offer. I was into the last round of job. There were around kitne
300 कैंडिडेट्स थे, 300 कैंडिडेट्स में से लास्ट 6 कैंडिडेट्स गए थे लास्ट राउंड में. देयर वर चांसेस कि 6 के 6 कैंडिडेट्स को द कंपनी वाज अबाउट टू हायर देम, ऑल 6 ऑफ देम टोटली. लेकिन अब यहाँ यार देखो, हमारे में अब थोड़ा कहूँ तो कॉलेज में है ना, थोड़ी होती है मस्ती और बहुत सारी बकचोदी, है ना. मैं गया था उस हॉल में, मुझे लगा था अटेंडेंस रूम है, लेकिन वो था प्लेसमेंट रूम. आई समहाउ सिक्योर्ड द प्लेस बिकॉज ऑफ माय गुड कम्युनिकेशन स्किल. आई सिक्योर्ड द प्लेस by the last round, till the last round. But what happened is, अब वो बताता हूँ यार, what happened is, I walked into the room and the HR, are you guys listening? Are you guys listening? Give me a heads up if you guys are listening. Yeah. I went into the room. I was smiling. The HR asked me, why are you smiling? I said, I'm happy that I'm here. She said, okay. She asked me all the questions. I answered all of them. And by the end, we were just about to discuss the salary. The base salary was 5.5 LP. I still remember, or 4.5 LP, something like this. And we were just about to discuss the salary. And I said, excuse me, ma'am, but I believe, तीन लोग थे मेरे सामने, तीन HR, एक HR था, एक technical शायद पता नहीं, but तीन लोग थे. And I said, I believe, ma'am, I am not the right person for this job. I'm not interested in this role that you're offering. सीधा, just imagine, जॉब सामने थाली में परोसी जा रही है और मैंने कह दिया कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ. The immediate next moment they were like, are you serious? What are you, do you know what you're talking? Can you hear yourself? I'm like, yeah. I said, तुम्हारे पास ये जो काम है ना, ये थोड़ा मशीन ऑपरेटर जैसा, लाइक ग्रेजुएट अप्रेंटिस काम है. अगर तुम्हारे पास, पता नहीं, मैंने तब ऐसे, मेरा कोर टेक्निकल, आई वाज फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो आई सेड कि कोई ऐसा काम होता था ना तो शायद मैं कर लेता, लेकिन इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है. And let me tell you, this job was the one where they had promised to, to abroad relocation or an exposure to live up and abroad for the next 6 months, for 6 months after you complete 12 to 18 months with the company. ये सारी चीजें पता होते हुए मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था. That particular moment, she laughed. She said, okay, we don't have some kind of job that you are saying right now, but we are glad you came up. And मैं निकल गया, उस रूम से निकल गया. The next moment, the next day, our HR walks in. I'll tell you the next moment. Our HR यानी कि जो training and placement head होती है, our ma'am, core ma'am was her name. She was very strict guy, and she knew me very well. She walked into our classroom filled with around 60 students, and she walked into job role. हाँ वो जीके सेंटर में, तो कंपनी का नाम नहीं बोलता था यार, लेकिन वो कंपनी थोड़ा केमिकल बेस्ड कंपनी थी, एंड वहां पे थोड़ा मशीन लाइन में, प्रोडक्शन में मेरा काम था. प्रोडक्शन में भी नहीं, प्रोडक्शन प्लानिंग कह सकते हैं, मैकेनिकल रोल अगेन, बट ठीक है. So she walked into the classroom and she said that, you know what the HR said yesterday while she left? They said, तुम्हारे पास टैलेंट बहुत है, बच्चों में बहुत कूट कूट के नॉलेज भरा है, लेकिन गरज कम है, उनके पास जॉब की जरूरत कम है. इसीलिए we came here assuming that we were hiring all 6 of them, but alas we have to hire only 2 people among them. तुम सोचो कितना बुरा होगा कि सिर्फ just because I said no to that job made them lose the entire interest into the college that they came in. That उसके बाद वो हमारे 2 साल हो गए, वो हमारी कॉलेज में कभी आए ही नहीं है जॉब प्लेसमेंट के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, उन्होंने मेरे बाद के कैंडिडेट्स भी लिए नहीं, जो मुझसे पहले 2 थे उन्हीं को ही लिए, उसके बाद के किसी चारों को लिया भी नहीं. Just imagine how much that those guys would be abusing me right now. But yeah, that was the part. उसके बाद से COVID happened. I met Vikram Dhoot. Neurotech design happened. And in the meanwhile, I was freelancing, managing some of my expenses somehow, and learning more about marketing. So here, for me, it was like I was learning and implementing, learning and implementing. One hand was learning, and second hand was implementing in the startup. And that's how I kept on learning and learning. There came one point in 2020, by the end of it, in December, where I realized that I don't belong in here. कि यार ये कंपनी ज्यादा कहीं दूर जा नहीं रही. I don't see 6 महीने हो गए, कंपनी का बहुत जरूर एक्सपोनेंशियल, एक significant growth नहीं है. So let's just do this thing कि यार let's skip it. कि let's switch it, कोई और स्टार्टअप देखते हैं. और अब ऐसा टाइम था कि मार्केटिंग में थोड़ा आगे निकल चुके थे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था. आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, लाइक अ पर्टिकुलर जॉब. फैमिली प्रेशर होता है, यू आर अबाउट 21 22 और आपको ऐसा है कि अब यू शुड स्टार्ट अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड आई स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स. ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. 15th of Jan 2021 I got my first job as in a multinational kind of company. जैसी होती है जॉब, मार्केटिंग में ही था लेकिन जॉब थी. थोड़ा सा मिड साइज स्टार्टअप था which has grown. It was a media marketing company.
15th of Jan I got the offer. 17th of Jan I took the offer with the company. 17th Jan को शाम में 7 बजे तक मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया था. Are you guys listening to me? On the very first day of my job, I resigned it by 7 p.m. by the end of the day. So I gave a very, मेरे पहले दिन पे ही वो जो सीईओ था, he just thrashed me off. उसने बहुत सारी बातें सुना दी ना, that made my mood off. I said कि ये कंपनी मेरे लिए बनी नहीं है, मुझे काम करना ही नहीं है. Again, good package comparative to what I was earning, of course, in a startup. Startup से तो वो अच्छा ही था, but I I left it in the very first day. Second, can you guys hear me? Sorry for the drop. Yeah, yeah. So what was I saying? Where did you miss? Yeah, where did I miss? What were you listening? What's the last point? Yeah, we are about to conclude. Even I have to go have my dinner, man. You left job. Yeah, yeah. The first job or second job? Which job? Aja, 7 p.m. Okay, okay, 7 p.m. So first job. First job. Second, yeah, I just dropped. So I left. Yeah, उनसे मुझे बहुत बातें सुना दी. I felt that I don't belong in this place. And honestly, I said कि I cannot, इतने सारे instruction उन्होंने पहले दिन ही दे दिया. I said I cannot work in there. So I left it. My parents were super pissed off at me. It was a very difficult situation for me, but yeah, I somehow managed. The second job, I left it in the very first month. That too because I had that too because I had my parents and my friends and everyone, they gave me a challenge that तुम ये job मुझे करके ही बता दो, and इसीलिए I did that job. इसके बीच में एक और जॉब मैं छोड़ चुका था लेके. It was not really job, but yeah, it was a job. So this was my third job basically. So इसीलिए I had to do it for the one very long month. बॉन्ड नहीं था इसमें. दीज आर मार्केटिंग रोल था और वो दे वर नॉट सो मिड टियर कंपनी थे. तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो कंपनी जो मैंने 1 महीना किया, इसमें बॉन्ड था. देयर वाज अ बॉन्ड फॉर 6 months. बट या मैंने प्रॉब्लम ही कुछ ऐसे बताया, एकदम मेडिकल सिचुएशन बता दिया दैट दे हैड टू रिलीव मी. आई लेफ्ट द जॉब देन एंड देयर. सो या लेट्स सो flashback in March 2021. March, April, May. These were the 3 months wherein, in all this meanwhile, I was working on my startup Neurotech design passively. I was looking out for more new jobs. I realized that I'm not a job person, so my job search was a little bit on the lower side. But I was looking actively for freelancing because one of my friend, my friend whom I started my startup with, very first startup, Yellowbacks, he was into. That was not right. मैंने थोड़ा झूठ बोला था. Of course, RC, you should have understand this. Yeah, my friend who I started my first startup with, he was into freelancing. He's still freelancing. He's a very big freelancer now. Does amazing projects into marketing. He's into marketing automation. His name is Virendra Suryavanshi. So yeah, he is currently staying in Bangalore. So yeah. So he said me that freelancing is really working good for him and it is amazing. And that's when he told me that, let's just come to blockchain. It is amazing. There's a lot of opportunity. And I was learning about blockchain, but this was the meanwhile where I started looking for more jobs. So see, second lockdown was imposed. I was passively working for Neurotech design. Our company was bootstrapped. Since it was lockdown, we were not making any revenue. We were not generating any sales. Our other companies were not generating any sales and revenue. So we were not getting paid. My freelancing was not working. That means I was not earning anything. I had left my earlier jobs, which were paying me pretty good amount of money. Just imagine leaving a job earning 40-50,000 a month. वो मैंने छोड़ दिया था खुद से, वो भी झूठ बोल के. So here I was. These 3 months were the most difficult phase, the darkest phase of my life. But I somehow managed. I somehow managed in securing, learning knowing more about my interest. Where do I find myself a very good fit? It took me one entire month. This was a meanwhile where I got into Spotify last second round और सारे बड़ी चीजें इसके दौरान हुई. But I believe everything was paving my path for the right thing where I belong in, which was New Capital, my current venture capital fund where I'm working. इससे पहले venture capital funds के बारे में पता था, उतना ही पता था जितना आज आपको पता है, लेकिन तब इंटरेस्ट था, कंपनी में आ गया तो और पता चलने लग गया.
And what got them interested was, my passion. I was so much passionate. It took me 1 month of long interview, 1 month. Every week, once or twice, I used to connect with one among the team members, and I used to convince them that why I'm a good fit. I don't know how many competition I had back then, but recently, like in December or January, when I had a call with our entire team, I remember my founder, Dhaval Parekh, saying me that he said me that hiring you was the most difficult task. He said you had a beginner's crypto knowledge, and since we were a venture capital fund, दे ऑनेस्टली बताओ तो वो मुझे गिनते ही नहीं थे, मुझे टीम का एक मेंबर कंसिडर नहीं करते थे, उनके उनकी बात कर लेते थे यार, उनके कॉल्स कर लेते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि छोड़ो यार, हमें जॉब मिला है, वही बहुत बड़ी बात है, समवन इज रिकॉग्नाइजिंग मी। और ऐसा टाइम आ गया था कि वेयर यू हैव फैमिली प्रेशर, यू हैव एवरी काइंड ऑफ प्रेशर, एंड नाउ इट इज काइंड ऑफ लेट कि जहां आप वापस से इंजीनियरिंग में भी नहीं जा सकते, आपको जो मिल रहा है वो लेना पड़ रहा है, एंड आई टुक इट। नाउ यू डूइंग स्टार्टअप और जॉब, हाँ, न्यू ट्राइब कैपिटल इट इज अ जॉब, बट बिजनेस वाली जॉब है, हाँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम एनी हाउ, they just want results. Now I am on a pretty good amount, I'm the head of marketing, so things move according to me. And yeah, doing startup, so हाँ, startups I am actively involved into startups, so काफी startups में involved रहता हूँ मैं at a time. So yeah, so ऐसे करते करते, yeah, Dhaval Parekh said me that day on the call, my founder, that hiring you was the most difficult job. He believed that I could never be a good fit for the company, and hence he never involved me into the company operations. But that particular day when I got a hike, I was promoted. He said, promoted मतलब क्या? मेरी team में मैं अकेला ही तो हूँ. There's only one guy in marketing, that's me. So he said that this day I can say that hiring you was the right decision for my company, and you have took up the job very well. So that was the point when I realized that I belong into the right place and I'm doing the right job. So yeah, here I am as an investor or active. Startup may no, not as an investor. Active as in, I help them connect with other investors. I help them connect with more partners and raise funds. Help them with their marketing as an advisor role, you can say, more or less. Doing startup is lonely. Connect with me, man. I'm more lonely than you, but yeah, it is not lonely at times. I see. A good working environment is needed. Exactly, man. All the jobs that I left was just because of the working environment and the culture which I could not fit in. Even still, I could say at some point of time, I believe there are days where I feel like this job is not really my cup of tea. But then I feel like this is the right place where I get to enjoy, try, implement, and live things at my own terms. So where else I could? From where did you find this job? Yeah, it is another interesting story. As I said, it took me 1 month of long interviews with this project. So I found it again on Angel List only. There was a job posting. But how I did stand out from the project, I'll give you a very master tip of how you could approach to a job listing that you are doing. I don't know how many of you follow me on LinkedIn, but I'm kind of a LinkedIn content creator. So what used to happen is LinkedIn, I had a very good reach. So the jobs which I used to apply on Angel List, the recruiters over there, I used to find them on LinkedIn. मतलब मैं यहाँ तो अप्लाई करता ही था, यानी कि अज्यूम करो Spotify has posted a job of head of communications या communication lead for APAC region, और उसका कोई person, like let's just say like Jack Green is the name of that person. Okay, I don't know, but Jack Green is the name of that person, and he's a recruiter. So what I do is I used to pitch this guy on LinkedIn on his handle. वहां पे I used to set up the connection. How this would benefit me was कि out of the entire list of the candidates that has applied for this particular job, he used to remember me just because I have approached him, or just because I am a connection of his on LinkedIn. I have sent him a message. He has at least acknowledged. भले वो reply नहीं कर रहा, लेकिन उसे पता है मेरा नाम तो flash हो रहा है उसकी आंखों के सामने. So that used to give me an upper edge over all the other candidates. So here's what I did. For New Tribe Capital, I came across the job posting. I went upon sending requests to all of them on LinkedIn. Now these guys are not so active on LinkedIn, and somehow I went upon checking onto their website. Website से मुझे उनके Telegram link मिले. Telegram link से मैं उनके Telegram पे गया. मेरा Telegram account तब था भी नहीं. I created a Telegram account for this. Somehow I could say this was my inner calling. I went upon sending them messages on Telegram. इतना spam किया था कि today, this day, my founder Dhaval Parekh, जिसने ये statement कहा था कि hiring you is the right decision, that guy has blocked me. He had blocked me because I was spamming his inbox. And he's a guy, of course, he's a super busy guy. Just imagine, yaar, an investor kind of a guy. I am spamming him. Please acknowledge, please read my messages. ऐसा मैं कर रहा था.
बट अल्टीमेटली ये जो जॉब पोस्टिंग जिसमें मैंने रिएक्ट किया था ये 3 महीने पुरानी थी. दे हैड लेफ्ट or forgotten looking out for more candidates. They were not even actively hiring, but looking at my passion and integrity for this particular role that I was pitching them so much, they thought that I could be a right fit and they took up the chance. They gambled upon me, and here I was today acting as the head of marketing and partnerships. So yeah, you are stubborn. Yeah, I am stubborn. Thank you, man. Please come. Yeah. So yeah, this is about my story, guys. So that's how I am into crypto today. I have been into a lot of projects. So whoever guys who are interested in knowing more about crypto and stuff, you can connect me on LinkedIn. You can connect me on Twitter. I believe Yash, you follow me on both the places, right? Please do share the links with them. Yeah. Sure, sure. Yeah. So yeah, anything from your end, Yash, you would like to note before we conclude the talks for the day? Sure, man. Thank you. I mean, you guys are my inspiration, I would say. Not me, but you guys are my inspiration because you see, I like to guide people. Basically, you'll see I do a lot of so much of these community talks and consultancy calls and all of this because I feel कि कहीं ना कहीं यार अगर मैं मेरे जैसे किसी एक को गाइड कर देता हूँ ना तो मैं सोचूंगा कि मैंने खुद को गाइड कर लिया कहीं ना कहीं. Because that was the thing, I had no one to guide us, and I went upon trial and error, and somehow I landed at this place. So I feel that if I could write at least one person to the right way, that would be great for me. So that is what it is. Okay, guys. So this was me, Vivek Mehta, head of marketing at New Trap Capital, signing off. It was great catching up with you. We shall catch up soon. And please keep up the spirit and never stop trying. Okay. Thank you. Twitter. Yeah. Good night, guys. See you soon again. Bye bye.